Today, the armed forces are giving their tribute, giving their gratitude to the COVID warriors, the health workers, the doctors, all of whom are on the front lines to fight this war against this pandemic COVID-19. We are here at the civil hospital. What you see are Mi-17s making a formation, two Mi-17s who are going to be here above this largest COVID hospital of Ahmedabad, where more than 600 patients have been admitted. Those helicopters will be showering petals, flower petals on this entire hospital, also nearby the hospital, to make sure that they show their vote of thanks, their gratitude to the people who have been working on the front lines to fight this war against this pandemic of COVID-19. You can see that the flower petals have been showered. You see all of the Mi-17 helicopters really working towards showering the petals here, showing their gratitude, showing their thanks, giving their thanks to the COVID warriors, the health workers, the doctors, the nurse staff, all of the people who have been putting their lives at danger and helping the other people. There are several health workers who don't go home for days altogether because they're on their duty. So very beautiful. What you see is the Mi-17 showering petals on the entire vicinity of the COVID-19 hospital that has been earmarked for only treating patients who have been admitted with the symptoms of COVID-19, who have tested COVID-19 positive. So what you see is a huge vote of thanks, a huge vote of gratitude that is shown by the armed forces. And not just the helicopters. What you also see here is the band that has made a formation right outside of the COVID-19 hospital, playing patriotic songs because they know that the patients inside will be able to hear their songs and will feel a little more motivated, a little more uplifted because of the work that they're doing. This is also a song that will echo inside of the hospital, telling the health workers that the armed forces are standing with you. You are the real warrior in this war against this pandemic, this war against an enemy that is not seen, this war against people who are suffering, who are suffering because of this pandemic. The people who used to protect our borders are now giving their vote of thanks, a vote of gratitude to the health workers who have been putting their lives at danger and treating patients and working tirelessly to make sure that we win this war against this pandemic COVID-19. In a show of solidarity and gratefulness to the COVID warriors who have been leading the fight against corona from the front line, the armed forces today showered flower petals on two COVID hospitals in Guwahati, the Guwahati Medical College Hospital and the Mahendra Mohan Chaudhary Hospital. Simultaneously, the band of Indian Air Forces played patriotic tunes to express gratefulness and solidarity to the brave COVID warriors as three Sukhois flew over the state assembly in Guwahati. The Sukhois took off from Dibrugarh and will go up to Kutch in Gujarat as a mark of respect to all who are leading this battle against corona from the front line. Right now we are present in a police war memorial where a tribute message has been written by the officials of three forces, and right now you can see that's the message which we are showing you right now, which they have written. I would ask Santosh to come here and we'll try to show you that's the message which has been written by Major General Alok Kakkad, who is Chief of Staff, Delhi headquarters, Delhi area, and he has written here to honor and express our deep gratitude to all members of police forces for the work as corona warriors during the COVID-19 pandemic. Our salute to their dedication on behalf of Indian Army, and that has been signed by Major General Alok Kakkad. If we move beyond, that's the message which has been written by Rear Admiral Vineet McCarthy, who is Assistant Chief of Naval Staff SR, and he has written on behalf of the Chief of Naval Staff Indian Navy, in which he writes, Indian Navy salutes the valor, dedication, sacrifice and steadfastness of the COVID warrior at the police forces and Central Armed Police Forces. May the victory be with you. And then he has signed it. And then the last message has been written by AVM PK Ghosh, who is Assistant Chief of Air Staff, and he has written on the behalf of the
chief of the staff, in which he writes, I feel extremely honored and privileged to having able to pay homage on behalf of IF of the on the National Police Memorial. The policemen are doing services to the nation, and they are delivering their services during the time of pandemic. And he is also writing that kudos to all the COVID warriors, and he continues to add that this good deed will go down the victory for several years. And he says, God bless Jai Hind. That's the message which has been written by the officials on the behalf of Chief of Staff Headquarters, on the behalf of Chief of Naval Staff, and also on the behalf of Chief of Air Staff. So that's the message which has been sent out, which clearly tells us the kind of dedication, the kind of gratitude which has been extended by the officials here who came here at the Police War Memorial. मैं इस वक्त लखनऊ के KGMU में हूं और KGMU के ऊपर अभी पुष्प वर्षा करी गई है। आप देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से पुष्प वर्षा हुई है। पुष्प वर्षा करने के बाद आप देखिए ये डॉक्टर्स की टीम है, इन सब की हौसला अफजाई के लिए ये पुष्प वर्षा करी गई है, क्योंकि लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार कोरोना की इस जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन रात एक करके लगातार ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप देखिए वापस से हेलीकॉप्टर आ रहा है और ये KGMU के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ ये बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आकर अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फूलों की वर्षा करेंगे इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, जो लगातार इस कोरोना की जंग में अपना योगदान दे रहे हैं, इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। और KGMU की बात करूं तो तकरीबन पूरे देश में जल सेना, थल सेना और वायु सेना देश के उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अभी तक भारत को कोरोना से सुरक्षित रखा है। और आने वाले समय में भी लगातार उनका प्रयास है कि भारत को कोरोना से बचाया जा सके, क्योंकि भारत जैसे विश्वव्यापी देश जिसकी की जनसंख्या बेहद ज़्यादा है, उसमें कोरोना वायरस के मामलों में कहीं ना कहीं गिरावट ज़रूर आई है। जिस तरह से लॉकडाउन इम्पोज किया गया और उसके बाद लगातार ये कोशिश थी प्रशासन की तरफ से कि कोरोना वायरस के मामले कम हों, और कहीं ना कहीं भारत उसमें सफल रहा है। उसके लिए आज सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के इन बहादुर जवानों को जो है सम्मान दिया गया। और उसके साथ साथ उन कोरोना वॉरियर्स को जिनमें कि डॉक्टर शामिल हैं, उसके साथ साथ अगर बात की जाए मेडिकल हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, और जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं लगातार कि इस कोरोना वॉरियर्स जो हैं लगातार अपना काम बखूबी कर रहे हैं और उनको सम्मान जो है वो दिया जाए। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं यहाँ खड़े हैं और सेना के बैंड की तरफ से इन्हें जो है सम्मान दिया जा रहा है। भारतीय सेना का ये बैंड ये सुनिश्चित कर रहा है कि एक कोरोना वॉरियर जो है वो दूसरे कोरोना वॉरियर को पूरी तरह से सम्मानित करे। और उसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेशल बैंड जो है वो भारतीय सेना का है, जो कि लगातार मधुर धुनों से ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस लॉकडाउन के बीच जो है इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाए, जिस तरह पूरी विश्व में किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बैंड है, जो कि मधुर धुन से ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और बाकी सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, उनका बेहद महत्वपूर्ण जो है रोल है। और ये जो धुनें बज रही हैं ये बताती हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो है वो तत्पर है, चाहे वो आतंक से लड़ने की बात हो या इस वक्त जब देश संकट में है उस वक्त देश के साथ खड़े होने की। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे जो मजदूर थे उनको आज एक स्पेशल ट्रेन द्वारा साबरमती से कानपुर लाया गया। आपको दिखा दें, ये कानपुर सेंट्रल के विजुअल्स हैं, जहां साफ तौर पे देखिए जो ये लेबर लोग थे जो बाहर फंसे हुए थे लॉकडाउन के दौरान, काफ़ी परेशान थे। एक लंबे समय के बाद राहत की सांस ली गई है और इनको कानपुर लाया गया है। आपको दिखा दें, इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, प्रॉपर इनका जो नाम पता है वो नोट किया जा रहा है और उसके बाद इनको इनके जनपद में भेजा जाएगा बसों द्वारा। बता दें, कानपुर में स्टेशन में इनके लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद इनकी स्क्रीनिंग के बाद इनको इनके ग्रुप के हिसाब से कि जिस जनपद के हैं अकॉर्डिंगली इनको उस बस में भेजा जाएगा। और
इनको एक मोहर लगाई जा रही है। इसके बाद ये 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहेंगे। अगर उस दौरान ये बाहर निकलते हैं तो इन पर कार्रवाई भी होगी। को बता दें ये स्पेशल ट्रेन थी जो कि साबरमती से तकरीबन 1200 जो मजदूर थे उनको लेकर के आज कानपुर आई है। और ये एक लंबे समय से वहाँ फंसे मजदूर थे जिन्होंने आज अपने घर जाने के लिए एक राहत की सांस ली है और इनके चेहरों पे एक खुशी दिखाई दे रही, चूंकि अभी लॉकडाउन के दौरान जहाँ फंसे थे वहाँ से अब अपने आज घर जा पाएंगे।